Salam dosto, you're listening to Taneer Jannat from Radio LUMS and you're tuned into Fankaar Ka Pakistan. This is the first episode for this show and I welcome you all to my brainchild, and this has been very long in the making. So I'll start by introducing what the show actually is about. When I was just another victim of the pandemic in 2020, I was working on a project with some of my friends, and we had this really crazy idea for some high school students that we would essentially try to identify what a distinct Pakistani identity is within an overall and cohesive brown one. So the way we went about it was that we thought that the best way to do it is to talk about the art, music, and literature of this region. And that really got me thinking into what makes our art Pakistani, what makes our literature Pakistani, and what makes our music Pakistani. And then I had the pleasure of being in a class with a very amazing doctor, Dr. Nasir Abbas over here actually. And उनकी क्लास में हमने पढ़ा था कि one of the most talented individuals that this country has ever seen, Iqbal Bano, sang Hum Dekhenge on live television, and it was her act of resilience and really her freedom of speech that got this going. And that's where I got the idea कि अगर हम इस मुल्क में रहते हैं और हम पाकिस्तान हैं तो इसमें अपनायत कहाँ से आती है? क्या हम एक रीजन से जुड़े हुए हैं, एक खित्ते से जुड़े हुए हैं, या किसी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं? मुझे तो ये लगता है कि हम शायद फ़न से जुड़े हुए हैं. पाकिस्तानी फ़न ऐसा है कि अब इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी इतनी अच्छी रिकग्निशन मिल रही है. एंड इट्स रियली अमेजिंग टू सी हाउ वेल वी आर डूइंग. We see very popular people making a name for themselves, and that is incredibly gratifying as a Pakistani to see. But I thought, what if we dial back a little, go to the start of where this country came from, and, really try to understand how art and literature and music created a Pakistani. So we're going to get started on how Pakistan came about in a time of what we call the movement of modernity. But it's important to understand that for Pakistan, being a post-colonial state, that wasn't the primary aim. We see works of Saadat Hasan Manto, we see works of Faiz Ahmed Faiz, Noon Mim Rashid, Habib Jalib, all these very important people who've shaped Pakistani history. But when you think about them, however progressive that they are, it's sometimes very difficult to place all of them on the same pedestal of modernism because all of them had different aims. So first we will get into discussing a bunch of these different works and the ideologies behind that and try to understand how that makes a Pakistani. So first off, we have Saadat Hasan Manto's Toba Tek Singh. This afsana is one of the most jolting afsanas that I have ever come across. And it really reflects how partition was not only a divide of regions, it wasn't just a divide of land, not a divide of people, but it was a divide of conception of who a person is. It was a divide of ideology at its core. And more than that, it led to shaping narratives. So Toba Tek Singh follows the story of Bishan Singh, a person in a mental asylum who is looking कि Toba Tek Singh कहाँ है. वो उस asylum में होता है और वो उसके मुख्तलिफ लोगों से पूछता है Toba Tek Singh कहाँ है, और उसको हर कोई एक मुख्तलिफ जवाब देता है. इसमें अहम बात ये है कि none of them have an accurate idea of, let alone where Toba Tek Singh is. They don't understand that if it's a person, if it's a city, if it's a thing. And that's what makes it really important, because partition
changed our life in the context of our worldviews completely. Life as we know it changed, and things that the people then thought कि हमेशा constant रहेंगी, they would always stay the same, that completely it was flipped on its head. So Bhishan Singh, it's his little, journey of trying to find out कि Toba Tek Singh kahan hai, and without giving you any spoilers, we just get to know कि हमें तो पता है कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है, बिकॉज हम 2023 में बैठे और funnily enough I have family who's from Toba Tek Singh, so I know where it is, but Bhishan Singh did not. And the afsana ends in a way that's very jolting, and it sort of tells us how, even though there is a divide between us, we have carried a lot of sentiments from the pre-colonial period into the post-colonial period. One of my favorite parts about the afsana and its ending is that it talks about the sky. It talks about the sky above Bhishan Singh and how it is the same sky whether you are standing in Pakistan or whether you are standing in India. It is the same blue or it is the same black in the night, but now we have a divide between us. So now that we do have this, differentiating factor of a border, so the idea that pre-partition sentiments, if they had to be translated into a Pakistani context now, what makes my idea if I were to be there? How do I situate it कि अब ये बड़े सगीर का तस्वर नहीं, ये पाकिस्तान का तस्वर है? And one way to think about that is social and political leanings that people had at different points. A very good example for that is Faiz Ahmed Faiz. वो तरक्की पसंद तहरीक का हिस्सा थे, उनके साथ और भी contemporaries थे. And his aim from before partition to continuing after the inception of Pakistan was for the establishment of a progressive movement, not just politically, but also in an academic way, in a literary sense. There was an association of progressive writers that was established later on, which took place in London, and then it was officially given a manifesto and a speech in India, and then that conveyed to be a part of what the Pakistani progressive writers movement would also be. And this is India pre-partition, Bari Sagir, not India as we know it today. So the most interesting thing that I see over there is that the idea of a wholesome movement, and when I say wholesome, I mean an all-encompassing, because it's dealing with political aspects, it's dealing with the social side of it, it's dealing with the academic side of it, and very important is the academic side, because over there we see कि अगर आपका अदब है तो एक हम जिसको कहते हैं क्लासिकी सेंस होती है, जिसमें हमारे पास बहुत अजीम नाम है, मीर, गालिब, हाली, ये सारे क्लासिकी दौर के अदीब हैं, और द आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ देयर वर्क इज़ कि इट्स वेरी ग्रैंड. उसमें शहनशाहियत का बहुत असलूब था, उसमें जो आपके पास कोर्ट्स होते हैं, रॉयल कोर्ट्स, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आता है. And then coming to a progressive writing, we see that there's a big change. There's a change to understanding human relations on a very minute level, on a very local and interpersonal level. There's a change to understanding what identity is from a national sense. There's change in understanding that if a human has to be a part of a household, if he has to be a part of a छोटा सा महल्ला भी, या फिर एक मुल्क का हिस्सा बनना है, तो वो इंसान किस तरह उस मुल्क का हिस्सा बनता है. यहाँ पे हमें फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर नज़र आता है, इंसान और आदमी का फ़र्क. आदमी कौन होता है और इंसान. अगेन आई टुक अ वेरी वंडरफुल क्लास, एंड उसमें
आदमी को इंसान बनना भी मैसर नहीं, ये गालिब का एक शेर का हिस्सा है। तो ये जो आदमी और इंसान का फ़र्क है, इसको समझने के लिए देयर इज़ ए वर्स ऑफ गालिब दैट इज़ particularly very insightful and that follows: बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। सो दिस फॉलोज़ हाउ इंसानियत जब हम समझते हैं, ह्यूमैनिटी, दैट इज़ अ वेरी ideal sense of what a person ought to be. And we see how partition really laid down a framework of what a Pakistani ought to be. जब हम इंसानियत को जोड़ते हैं एक पाकिस्तानी सेंटिमेंट के साथ, तो हमें ये बहुत म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ें नहीं लगती, बिकॉज़ एक पाकिस्तानी वही हो सकता है जिसमें इंसानियत भी होगी। तो कीपिंग दिस इन माइंड, the progressive writers movement, what they wanted to do was to essentially make sure that you have an admi, you have a person who is being humanized, जिसमें इंसानियत पैदा हो रही है। तो यहाँ पे जो मॉडर्निज़म का तस्वर है वो एक कॉलोनियल लेंस से देखा जाएगा, बिकॉज़ फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मॉडर्निज़म किस तरह प्रिवेल किया यहाँ पे वहाँ पे, अक्सर वी थिंक ऑफ अ लॉट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, एंड वाइल दैट मे बी ट्रू टू सम एक्सटेंट, it's more intersectional, because you will have to understand the problems attached with completely adapting into a Western ideal of modernism. And that is particularly more difficult because Pakistan was dealing from a colonial hangover, as a term that we've understood and heard a lot, very widely used these days actually. And so over there, it's particularly interesting because we were dealing from the after effects of, something that was disastrous to our history. It was a very traumatic time collectively for the entire generation. और फिर तकसीम के जो इवेंट्स थे उसमें से गुज़र के आना, वो एक अलग उसके ट्रॉमा था। तो जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बनना पड़ा था पहले, क्योंकि अब आप एक अपनी तहज़ीब से जब एक और तहज़ीब में जा रहे हैं जो उसी का हिस्सा है, तो फिर आपको अपने कुछ ख़यालात और तसव्वुर भी बदलने पड़ते हैं। तो इधर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमारे पास पॉलिटिकल लीनिंग्स आती हैं तो उसमें एक हमें आइडिया ये भी देखना पड़ता है कि कौन इंक्लूडेड है और कौन एक्सक्लूडेड है। तो जो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट हैं उनके ऑपोजिट भी एक मूवमेंट थी जिसके एक लीडर तो शायद हम ना कह सकें, लेकिन फ्रंट रनर्स नून मीम राशिद थे। तो फैज़ अहमद फैज़ और नून मीम राशिद बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन they had differences in opinion, which is completely fair. But it's very interesting to see how Faiz Ahmed Faiz ka perspective is more progressive, and then Noon Meme Rashid's work is the one that's actually more modernist. So now that we've talked about Faiz, we will listen to what Noon Meme Rashid talks about. Interestingly, we will start by listening to a recitation, his nazm called Zindagi Se Darte Ho, which also happens to be my favorite nazm of all time. So here it is, a recitation by Zia Muhyiddin, Zindagi Se Darte Ho. जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी ज़बान भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मानी के रिश्ता हाय आहन से आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई के, बेरिया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हेच आरजूमंदी।
ये शबे ज़बां बंदी है रहे खुदा बंदी। तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं। हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, नूर की ज़बां बनकर। हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ां बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। रोशनी से डरते हो। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर। रात का लबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। अजदहा में इंसान से फर्द की नवा आई, ज़ात की सदा आई। राह शौक में जैसे राह रो का खून लपके, एक नया जुनून लपके। आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो। तुम अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हो। तुम अभी से डरते हो। That was actually one of the best recitations I've ever heard in my life. But नून मीम राशिद के बारे में जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है, यहाँ पे वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ फ़र्द इस्तेमाल करते हैं। एक फ़र्द की नवा आई, that is the line, the misra that is used over here. And अब हमें इस फ़र्द को समझने की ज़रूरत है कि ये फ़र्द कौन है। जब पाकिस्तान बन गया और उसके बाद हमारे पास एक अपना पूरा नई सोसाइटी कायम हुई है, मुआशरा कायम हुआ है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे लोग हैं, तो फिर इनमें फ़र्द कौन है? क्या मैं और आप फ़र्द हैं? क्या हमारे सारे जानने वाले फ़र्द हैं? क्या मुआशरे का हर हिस्सा जिसको हम एक फ़र्द कह सकते हैं, क्या एक एक फ़र्द करके ये मुमकिन है कि मुआशरा बने? This is something that I actually got to thinking, and I learned that about a year ago that फ़र्द वो नहीं जो मुआशरे के साथ चलता है। जब एक फ़र्द की नवा आई है तो फ़र्द वही होगा जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट है, जो मुआशरे के असूल और ज़वाबित पे नहीं चलता, और इसके बावजूद फ़र्द एक सेवियर भी है। So you know the idea कि when there's someone in danger and there has to be someone who's going to save them, they're always a part of our society, but they're always a little above us. They're always a little different. And so उसमें उनको क्या फ़जीलत हासिल है हम पे? क्या वो इंसानियत का हमसे एक बुलंद दर्जा रखते हैं? क्या वो इंसान है और आदमी नहीं? या वो सिर्फ फ़र्द है? So you see, over here in the post-colonial period, we have 3 inceptions of what a person could be. एक आदमी है, एक इंसान है और एक फ़र्द है। और गालिब तो पार्टीशन से पहले के थे, लेकिन इनका जो इन्फ्लुएंस है आप देखें कि मॉडर्न शायरी पे अभी भी रहा है। जो हमने पहले बात की क्लासिकी शायरी का जो ग्रैंडोर है, इट कंटिन्यूड, एंड इट while progressive writing was very different, it was possible because a classical version of that writing had existed before partition. So to understand what a person in the post-partition Pakistan is अगर वो फ़र्द है तो फ़र्द ऐसा होगा जो शायद उसको हम रेबल तो ना कह सकें, लेकिन हम उसको ये कह सकते हैं कि वो माशरे से लड़ने के लिए तैयार है। और वो लड़ेगा क्यों? क्या मुआशरा ख़राब है या फ़र्द ख़राब है? इसकी सिर्फ़ एक सच्चाई है, और वो ये है कि हर मुआशरा, सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, हर मुआशरा दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, वहाँ पे हमेशा आपके पास लोग होते हैं जो मुआशरे की भलाई के बरअक्स काम करते हैं। तो फिर उनको कौन बचाएगा? उनको फ़र्द ही बचाएगा। तो यहाँ पे जो नून मीम राशिद का इन्फ्लुएंस है, एंड ओवर हियर वी आर जस्ट लुकिंग एट वन नज़्म ऑफ हिज, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर नून मीम राशिद इन मच मोर डिटेल इन द कमिंग एपिसोड्स, बट फॉर नाउ दिस वन नज़्म ऑफ हिज, एंड द टाइटल इज़ क्वाइट लिटरली ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं. In the same nazm, he has used
the word admi and fard. And again, it's an all-encompassing idea of what a Pakistani could be. And interestingly, there's an article, it's called Noon Meem Rashid aur Khuda. And uske andar we read a lot about the influence on Noon Meem Rashid from a lot of Western readers, and how Greek philosophy also had an influence. But an interesting thing is that the idea of man is the measure of all things. And that one perspective to have an impact on the contemporary Pakistani art and literature, जिसको हम जदीद अदब कहते हैं, modern अदब कहते हैं. Again, we're using the word modern over here. उसमें important इसलिए है because हमारे पास ये एक तस्वुर आया है पोस्ट पार्टीशन के जब हमारे पास जिनाह का तस्वुर आता है, we always see that it was his efforts that got us to this great country that has given us so much. So शायद हम सब में भी जिनाह का एक छोटा सा हिस्सा होगा कि जिनाह essentially is the embodiment of the fard. Then we can understand that people like Allama Iqbal, the first person to really come up with an idea for a separate homeland, he was a fard. And then you have other important people who have done so much for this country. Even Jinnah's sister, Fatma Jinnah, again, a fard. And what's important to understand over here is that fard, इंसान और आदमी का ताल्लुक सिर्फ एक जिन्स से नहीं, ये या सिर्फ मर्द की बात नहीं हो रही, यहाँ पे औरतों का भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि इंसान तो दोनों हैं, तो फ़र्द भी दोनों हो सकते हैं. तो जो हमारे पास एक परसेप्शन है कि सेवियर जो है अक्सर मैस्कुलिन होता है, तो उसमें भी हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल आती है कि that is not always true, even though historically we have seen more examples of that. But situating Pakistani identity through literature and art, going back to Noon Meem Rashid, it's particularly interesting because you see कि उनकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि आज तक लोग उनको सुनते हैं. मेरी दीवार पे जो आर्ट वर्क है वो भी नून मीम राशिद की नज़म से इंस्पायर्ड है. तो you see how all of us are connected in every way possible to partition and to the people who were a part of that movement. Now, interestingly, I also had the pleasure of once having a guest session from Dr. Ali Raza, a wonderful historian. And he talked about how none of us are detached from history. Every one of us have one relation or the other to something that happened in this world maybe 100 years ago, maybe in a completely different region. But we are all tied to that, maybe because of the region that we're a part of. But I think it has more to do with how we situate a Pakistani identity. So we've delved a little bit into how literature has particularly played a huge part in identifying what a Pakistani is. On a very small scale, we've seen how particularities of nazms and poems, and even though एक नज़म को पोम नहीं कहना चाहिए, सिर्फ नज़म ही कहना चाहिए, उसके अंदर हम कैसे एक पाकिस्तानी की अपनाइयत को देख सकते हैं. तो interestingly, I mentioned at the start of the episode that art and music also had a very important role to play in this entire movement of understanding who we are. Because more than anything, if I dare say, is partition really brought up the question of who am I? Am I someone who is tied to a piece of land? Am I someone who is tied to a family or a tradition? Am I someone who is tied to an ideology? Am I someone who is tied to a religion? Or am I someone who is tied to all of these? So I think it would be only appropriate to explore this much deeper through art and literature in the coming episodes. But for now, this was our introductory episode. Before we end, I would like to mention that
recently we lost one of the most important contemporary figures that Pakistani literature has ever seen, and that was Ya Muhyiddin Sahab. We've played a bunch of his recitations also over here, and we will continue to do so in the progression of this show. And I would like you all to keep him in our hearts and in our minds alongside Amjad Islam Amjad Sahab, जिनकी वफ़ात भी या मुहीद्दीन साहब से बिल्कुल 2 दिन पहले हुई. और अदील हाशमी साहब ने पिछले साल फैज़ फेस्टिवल पे कहा था कि उन्होंने ज़िया मुहीद्दीन साहब के बारे में कहा था कि इस कौम ने इनसे कोई कर्ज़ा तो नहीं लिया, लेकिन हम सारे इनके मक़रूज़ हैं. And I think that is a way to respect and to laud all of our writers, all of our artists, all of our musicians, and everyone else who has contributed to this country. But for now, I hope all of you will be keeping healthy and happy. और मिलते हैं एक वक्फे के बाद.